Assalamu alaikum. My name is Waleed. Now, आज हम जो है ये what is this? I'm recording this and on Discord, and we will building the inshallah taala trying to build and hope so and दुआ करेंगे अल्लाह से भी इस्तिकामत दे हमें कि we will make some like-minded people community, like-minded people community that inshallah will be uh, all around the world से लोग हों, ठीक है, and we will be each person should be more उसमें जो है ना we need the peoples which are उसमें लोग जो हैं वो serious हों, ठीक है, about this thing. We make a solid type of group or community trying to be like सारे. I'm not claim कोई भी नहीं बंदा इस तरह कर सकता है या करेगा भी तो it's like very odd, and I think so trying to be better Muslim and trying to be better human, improving in every index of human कौन से index हो सकते हैं, mental, physical, spiritual, and all that, and social. So trying to be improving these things inshallah. So today we will be it's specific नहीं होगा with the the religion is because the religion itself अब हमें बहुत सारी चीजें जो ना has a way of life देता है, so we are not thinking in the lens of सिर्फ कि हमने जो है ना religion के खास जो है वो एक फील्ड के अंदर ही हमने रहना है ऑफ डूइंग इबादत और ऑल ऑफ दैट, बट वी हैव एज we are will be thinking as a holistic life way of life perspective say, and dealing from everything from the financial sector to the spiritual sector to the tazkiyah and the purification of the soul, and from the purification of the body itself. So a lot of different things will be covered and discussion होंगे हमारे topics. So उसमें हम share करेंगे चीजें, and that all like a community which is forgotten, or maybe a lot of communities if we can find in the world, online or offline, Muslim community and the physical community. I think it's like a Dawat Islami and the Tablighi Jamaat, and you can go and then make a friends or make a peoples and try to be a better Muslim and a better human as well. So you can learn not only from this in the spiritual side, but you can improve from the financial side as well. Because, for example, you need a self-discipline, you need a resilience, you need a mental toughness and consistency that they can be learned from the joining, I think, from these the communities or these Dawat Islami or Tablighi Jamaat. So it's not just constraint हमने करना कि ये जो है ये यहाँ लेबल्ड करना या टैग करना कि दिस इज यहाँ पे सिर्फ यही होगा. नो, इवन हमें अपने आप को ओपन माइंडेड इस एतबार से लिखना चाहिए. ओके, सो वी आर नॉट हम जो अगर इमेज किसी की खराब है, इट डजंट नो मीन कि वो 100% या दिस इज एग्जैक्टली द थिंग or the order of your perception is correct. Maybe you are wrong about your perception of the something is viewed. Okay, okay, अगर वो ये ऐसे है तो ये ऐसे ही होगा. It doesn't लाजमी नहीं ये चीजें होती. ठीक है. So first of all, let's discuss a lot of things in order to be इसमें चीजें हैं जो चल रही होती हैं I have also I make a lot of videos about the of the about Islam, and a lot of things I have to जैसे हम कहते हैं दावा, then I will just stop it on because of some reasons, and what some personal reason and that. So also I think the always dua we have to Allah से करना चाहिए कि हमें इस्तिकामत दें whatever we are endeavor we are pursuing. Okay, so there's so much problem कि अगर हम किसी चीज़ को pursue करते हैं हम उसमें consistent नहीं रहते, and that was the again in my case as well. I'm trying to make a community, I'm trying to make think I'm failed. Okay, Muslim community कह लें आप इसको, like minded लोगों की community कह लें. ठीक है. So what I will think है कि ये सब प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, इंसान हर सिर्फ मेरी नहीं
मे बी आपकी लाइफ में या जो भी सुनेगा कि उसको कंसिस्टेंसी किसी चीज़ के अंदर नहीं आती, मे बी बहुत सारे लोग वो में आए या उसके अंदर डेवलप हो जाए, लेकिन some people I think will be face this thing. Okay, so so next, what will be the topic of discussion? For example, I will tell that कि सबसे पहले जो दो सेक्टर्स हैं उसको हम डील करेंगे, एंड उसके साथ में भी हम ओपन है डिफरेंट टॉपिक्स में, बट आई थिंक आज यहाँ में भी फर्दर चीज़ें जो हैं हम वो डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट ए सेल्फ हेल्प, एंड देन से जो इसको सेल्फ हेल्प कह लें या प्योरिफिकेशन ऑफ सेल्फ कह लें या सोल कह लें, ठीक है, या तज़किया नफ्स कह लें, एंड so, and then the second one is the financial independence or financial freedom and all of that. And the point is, ilm और अमल ये दोनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, ठीक है। अगर इफ हमें कोशिश ये करनी है कि इल्म के बाद अमल जो है उसको ज़िंदगी में जो इल्म हासिल किया है उसको अमल करें, ना कि हम सिर्फ इल्म से भी पहले एक चीज़ आती है जो हम सिर्फ मालूमात है, हमें मालूमात से आगे बढ़कर इल्म की तरफ सफ़र करना है और इल्म से आगे अमल तक का सफ़र तय करना है, ठीक है। सो एंड दैट वाज द पॉइंट, एंड so the skinless me why it is the point of a discussion in first of all from thousand different topics, why I decided to pursue these two topics, and what is the main mission or main vision or main thing behind of this all these two topics. So सबसे पहले जो ना like इंसान को पर्पस ऑफ लाइफ सबसे पहले ये एक चीज़ होती है, उसके बाद वो देखता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, एंड देन इस कौन कौन सी चीज़ों का हमारी लाइफ में या ओवरऑल ह्यूमैनिटी में क्या असर जो है वो होगा, ठीक है। एंड व्हेन यू थिंक विद द लेंस ऑफ दिस तसव्वुफ भी आप इसे कह सकते हैं, बहरहाल इन द पॉइंट a lot of people disagree with the tasawwuf itself, but हम उसकी बात नहीं कर रहे, but the point is okay, and all the things which is happening in the world right now, which is bad or things which you are thinking, yeah, even yourself you're facing these things, and all is the result of uh, not having a uh, tazkiyah nafs, or you can say that purification of the soul ना होने की वजह है जो भी आजकल आज हम फेस कर रहे हैं, फ्रॉम मोरालिटी perspective, फ्रॉम इंडिविजुअल perspective, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो हम अपने अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह, अपने आप को सेल्फ डेवलप करना है, अपने आप के अंदर रिजिलियंस लेकर आनी है, एंड टफनेस लेके आनी है, मेंटल टफनेस, ठीक है, सख्त जान बनना है, एंड ऑल ऑफ a lot of psychologists even say neuroscientists that के आज के हमारा जो Gen Z कह लें आप, it's too much problem of easy life कह लें, ठीक है, we are sitting sedentary lifestyle, not doing too much any hard things, and they are facing a lot of addiction as well, from food addiction to some other type of addictions, and you know better what all the addictions even you are facing, or even you were facing you from you were sawing from the community as well, or the uh, रोजमर्रा, ठीक है। So what will be the solution on these things? ये है हमारा जो सबसे पहले इसमें फाइनेंशियल से पहले जो ये है सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ कैलिंग, स्टूडेंट ऑफ learning new things day by day. The point is, how what is the solution of this thing? Where we can be a resilience, where develop resilience, which is self discipline हो हमारा अंदर, और तमाम वो चीज़ the way of life we have to pursue will be according to the Islam. Okay, not to follow our own self, जिसे हम कहते हैं अपने आप के जो अपने आप का सेल्फ है, अपने आप का नफ्स है, उसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना, बट के अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। सो दिस इज वाज वेरी डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू परस्यू दिस थिंग, अदरवाइज अगर ये ना होता तो एवरीबॉडी will be like good peoples around the world, and the world will enjoying the fruitful things, and like हम खुशहाली देखते हम हर मोरालिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कीना, हसद, बुग्स, and then lalach, and then all of that thing will be not to be in this world अगर हम इस चीज को pursue करते हैं, ठीक है।
इवन मुस्लिम itself बहुत हजारों बल्कि बिलियंस में अगर लोग हैं, आई इट्स मे बी बहुत ही कम, लाइक बिलियंस में कुछ हजार या कुछ लाख, not have any data, but the thing is we are lacking this kind of part. And the best part was in हम जब अपने देखते हैं कि हमारे असलाफ ने क्या किया, when we think and हमने नहीं रीड किया होता तो हम कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। also उन्होंने इतना कुछ किया कि if we have able to read their stuff, what वो क्या कर चुके हैं, यानी उन्होंने क्या किस लेवल की कोशिश की है। ठीक है, तब तक हमें जो भी जितना भी फेज हमें आ रहा है वो सब उन्हीं के ट्रांसफर किया हुआ है हमने। ठीक है, और हम फिर भी उन्हें ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे बड़ी एग्जांपल आई विल से टू अशरफ अली थानवी साहब है। ठीक है, आल्सो आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, लाइक बहुत पहले। ठीक है, अब अब आई एम नॉट डिसएग्री विद, आई विल डिसएग्री a lot of thing, but it's a very, जो भी दावा का काम करे, जो भी अल्लाह के दीन के लिए काम करे, आई एम 100% विद हिम। बट आप अपने इख्तिलाफ अपनी जगह रख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द मेन थिंग वाज लाइक जो इख्तिलाफ की जगह थी वो अशरफ अली थानवी साहब का, इंजीनियर साहब ने उन पर जो इतनी बेजा तनकीद की वजह से जो लाइक उनका जो 1,000 से ज्यादा जो उनकी किताबें थी, एंड दे आर लाइक के इतनी लेवल की बुक्स हैं, इवन के जो मैंने ऑल ऑफ देम तो नहीं देखी लेकिन इतनी देखी है, लाइक अगर हम उन्हें पढ़ भी लें, ठीक है, उसको मैंडेटरी रीडिंग करवा दें या इसको लाजम कर दें, ठीक है, लिटरली फॉर एवरीबॉडी जो स्कूल में हो, आई थिंक इट विल बी लाइक ग्रेटेस्ट थिंग हैपन। सो व्हाई इट इज गोइंग गॉन रॉन्ग, हम अपने असलाफ से जो है से जो है ना उनका पता ही नहीं है हमें वो कौन है, उन्होंने क्या किया है उनका, ना हम पढ़ने पे हमारा इतना शगफ है, ना मुताले में है, ना उन ऐसे लोगों के पास बैठने पर है जो इस तरह की डिस्कशंस करें। एंड दैट वाज व्हाई बिकॉज वी आर ओनली इन entangled with this system of capitalism system, or you can say the hustle culture where everybody is hustling to get to get what the necessity of life. So again this is very complex question, and even in topics पे आपको बात करने के लिए you have to be like too much reading in this in the philosophy of the thing as well. But I am not the student of philosophy as much, but I will try. This is my also the ये मेरा एक इसमें भी शगफ है, लेकिन the time की किल्लत की वजह से I'm not pursuing the philosophy. Okay, but लाइक इसमें जो प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर में, एवरीबॉडी इज हसलिंग एंड देन इन्फ्लेशन एंड सबसे पहले जो मेन चीज आती है वो मनी। एंड देन वो, और अभी मैं टॉपिक ऊपर नीचे कर रहा हूँ, कभी जस्टियस और कभी मनी एंड ऑल दैट, बट आई थिंक इट्स विल बी अ नेचुरल फ्लो फ्रॉम माय साइड, एंड आई कैन बी maybe we can make some people like same minded, and then making a community where we can हम एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करें, एक दूसरे की हेल्प करें इन finding the solutions of the different problems which everybody is facing. Okay, so the problem was about the money is itself is that this is created by nothing and getting from thin air. एंड अब इंग्लिश भी है साथ में उर्दू भी बोलने की कोशिश करता हूँ। ये जो पैसे का मसला है दैट वाज कि ये जो चीज़ है ये थिन आउट ऑफ द एयर बन रहा है, लाइक इसके बैकएंड पे एक सोना नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत पहले था लेकिन अब जो फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग ने क्या किया कि अब उनको जो है ना हर बैंक को अपने फ्रैक्शनल अमाउंट में रिजर्व अमाउंट रखनी पड़ती है इन ऑर्डर टू बी फंक्शनल। एंड देन उस फ्रैक्शंस तो होगी उसके बैक एंड पे, बट उसके ऊपर वो जो है पैसा है वो थिन आउट ऑफ द एयर जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ बैंक ने मेरे से जो है 100 रुपीज मैंने उसको दिए हैं टू लाइक इन सेविंग, सो इन द अकाउंट, लाइक मैंने 100 रुपये रखे हुए हैं इन माई अकाउंट, तो बैंक क्या करता है उस 100 रुपीज में से आई थिंक जितनी भी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो उतनी रखेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रखे या $20 रखे, ठीक है, अब $20 उसने फ्रैक्शनल रिजर्व में रखे और $80 से उसने आगे किसी को लोन दे दिया, किसी को उसमें उसने जब $80 वो लोन देगा एंड देन ही यूज दैट मनी टू एबल टू मेक अ लॉट ऑफ, लाइक उस $80 में फॉर एग्जांपल उसका
2% कितना इंटरेस्ट होगा मार्केट में, आई डोंट नो, बट जितना भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा करंटली, तो वो हर महीने बाद या जितनी जो जैसे भी उनके होगा स्ट्रक्चर, उस वहाँ से वो उस लोन की एवज वसूल करेगा। उस लोन की एवज ही विल डिटेक्टेड, ही विल गेट द मनी फ्रॉम द लोनर जिसने लोन लिया होगा। ओके, सो दैट वाज द पॉइंट कि उस मनी से उसने वो पैसा जनरेट किया जो उसके फ्रैक्शनल में है, उसके रिजर्व में है नहीं था, एंड दैट वाज वेयर इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ दैट Sudi Nizam is comes, and I'm not much of like practically I'm not too much experienced in any of sectors. I'm just learning this thing, and that was it. If I'm wrong in any of the understandings, then tell me that what in the thing I'm wrong. Okay, maybe you have much experience than me, maybe knowledge. So I am really happy to um, to hear your perspective and your knowledge, your experience. सो इससे क्या होता है कि इतने पैसे से इतना पैसा जनरेट होता है जो कि एक्चुअल में पैसा नहीं है, बट वो एक इंटरेस्ट है, ठीक है। दिस गिव अ सोसाइटी एज ए लाइक बबल, ओके, एंड दैट वाज डेप्ट। और इवन अमेरिका को भी आप देखेंगे, दुनिया की सुपर पावर, वो भी डेप्ट उसमें पता नहीं कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। कैन यू इमेजिन दैट एवरी कंट्री इज गोइंग इन डेप्टिंग डेप्ट डेप्ट डेप्ट। Okay, so this is too much difficult a topic to understand. Even I am still learning, and I don't even know much of the if it. Okay, and this was very difficult to understand. And then I was even thinking कि यार अगर तो ये ऐसा पॉसिबल है, तो ये क्यों फिर दुनिया जो है इस प्रॉब्लम में है और लोग क्यों इसके जो है ना अगेंस्ट जाते हैं। तो आई थिंक दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज to the knowledge, and the peoples are don't even know what the money is. Even they are working hard enough, 9 to 5, working hard enough for entire life for this paper, which is don't actually anything. This is just a piece of paper is printed by the state bank or the Fed of the America. Okay, Federal Reserve. And दिस इज द बिगेस्ट थिंग। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो है इल्म। आपके पास इल्म ही नहीं है, और उसको कैसे, ये एक प्रोपागेंडा के इतबार से कह लें या एक ऐसा कल्चर हसरिंग का कह लें कि लोग सोचने पर भी मजबूर नहीं है, लाइक कि ये है क्या, ठीक है। किसी ने भी ये इस वजह से ओनली फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द थिंग, इवन एंड देन दोज पीपल हु अंडरस्टैंड दिस थिंग यूजेस देयर, उसको अपने एतबार से अपने लिहाज से वो अपने बेनिफिट में यूज़ कर रहे हैं टू मेक अ लॉट ऑफ फॉर्च्यून्स। ओके, एंड दिस इज नॉट, वो बहुत बड़ी मे बी गिदर सिंगी है या नहीं है, बहरहाल पॉइंट इज what is the problem, and then you are thinking कि एक बंदा जो हासिल कर रहा है, वर्क हार्ड कर रहा है, they are not getting rich। इसका मतलब working hard does not make you rich, and then the point is all of them my concern, all my discussion is revolve around the money is, and then इसके बाद हमारे पास self dependence, self freedom, and then दी तज़किया है नफ्स और self purification of soul। अच्छा, why it is important कि यार एक बंदा के पास इतनी ताकत नहीं रहती, सुबह जाता है शाम को आता है, एंड देन हाउ दे विल डू एनीथिंग, इवन वो थिंक भी कैसे कर सकता है out of the box। Okay, even how they will enforce you will enforce him to be the practical Muslim। Okay, it's hard, maybe then you can see a lot of practicing Muslim, I'm not against nauzubillah, or not, I'm not justifying the sin of the people who are not practical because of this system। Okay, but the point is वो कैसे सोचेगा, वो कैसे अमल करेगा, ठीक है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है द वे ऑफ लाइफ की, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ की। सो आई थिंक दिस इज अ बिगेस्ट थिंग टू बी लाइक, हमें इस सिस्टम से कैसे अपने आप को पोजीशन करना है कि हम अब फ्रीडम अचीव कर सकें, ठीक है, मोनिटेरली, ठीक है, एंड देन बी एबल टू डू द थिंग्स। ओके, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास इतनी वेल्थ होगी तो यू आर नाउ एलिजिबल फॉर doing practicing being Muslim। not that was not the case, but the case of is कि आप अपने आप को practicing बनाएं, हम बनाएं, ठीक है, तो कोशिश करें, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पर वर्क करें ताकि वी हैव इस कल्चर से, इस हसलिंग कल्चर से बाहर आए और अपने आप को जो है ट्रूली फ्रीडम करें मनी से, ठीक है, मनी से फ्री करें।
बिकॉज वाई बिकॉज इससे आगे आप सोच नहीं चीज़ें को करें, ठीक है, इसी के आगे घूम रही हैं। और वही सबसे मुश्किल हुई चीज़, जिस चीज़ को इंसान सबसे ज़्यादा टाइम दे रहा है वही चीज़ उसे नहीं मिल रही। दिस वॉज अ वेरी वेरी अजीब बात नहीं है कि इतने लोग, मिलियंस पीपल वर्किंग फॉर दिस थिंग which is many, and a few will get be rich from it, and the majority of the people will be living a hand to mouth, or you can get middle class. Okay, so so and what will be the like solution? I'm still learning. I'm not the one कि भाई मैं ये हूँ, मैंने ये पढ़ा है या मैंने ये जानता हूँ, but I'm still student of the knowledge, and knowledge का student हूँ, ठीक है। But what will be the thing is we have to pursue which is called the like leveraging and all of that different. There's too much big topics to cover. Inshallah we will cover it, and there's so much people who has been like the key thinkers in the field of this thing. For example, never replicant ho gaya, theek hai, and all that people. So we can learn from there as well. And then some books as well, and all of things will be inshallah coming soon. And like recommendation of the books which will be important for the student of knowledge. And सबसे पहले कैसे मनी सिस्टम कैसे काम करता है, बैंकिंग कैसे काम करती है, जो फेड और अमेरिका है, फेडरल रिजर्व बैंक, व्हाट विल देयर काम, उनका क्या काम है, वो कैसे वजूद में आया, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच इज वर्किंग ऑन दैट थिंग। एंड देन उनके सॉल्यूशंस हम क्या कर सकते हैं इस इन्फ्लेशन, इस ऐसे निज़ाम को bypass करने के लिए, whatsoever the point is, okay, in order to be like the free truly. Even then, and the self defense point, uh, self सेल्फ हेल्प या फिटनेस में हम क्या कर सकते हैं, और इवन इफ यू आर पीपल लिसनिंग यू हैव अ बेटर सोल्यूशन, टेल मी। I'm still the knowledge of student of knowledge, so tell me again, or tell me in the community, you will be like happy inshallah. So the point is उसमें हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे जो है क्लासिकल स्कॉलर्स हैं। सॉरी, अच्छा, क्लासिकल स्कॉलर्स हैं। दैन हमारे पास पिछली सदी के भी स्कॉलर्स हैं, इसमें अशरफ थानवी साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया। आज हमें जितना भी जो फेज है वो तबलीगी जमात, और then we have Dawat Islami. This is a true jamaat which is very important, and because these are the one which is practical, okay, is not a practical, okay. You can go to their thing, okay, join to make you a better Muslim, okay. So जिसमें हमारे पास इसलिए एसकादरी हैं, and then a lot of great personalities. We have to get their knowledge, उनका knowledge, उनका experience उनसे, and then the community. So a lot of different things, जिसमें फिर एक खानका सिस्टम है था जो कि थानवी साहब, आई डोंट नो अब वो खानका सिस्टम जो है वो कितनी जगह पे है वो, लेकिन आई थिंक द खानका सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग for purification of the soul, the best community center you can say. And I think we will like building the community center as well digitally, because physically it's a lot of problem, like physically आप जरूरी नहीं आपके शहर के अंदर कोई इस तरह का हो सिस्टम, या आपके पास टाइम हो, because you are enslaved with this time, with the money system. You don't even have a time to go to pursue these type of things, to be able to better Muslim and a human, okay, to to be a more तस्किन नफ्स जो इसमें आपका हो रहा हो. So I think this community discord will be like very very beneficial इंशाल्लाह, अगर हम कामयाब हो जाते हैं इसको एक कम्युनिटी की शक्ल देने में, जहाँ पे कुछ लोग हों जो कि आपस में डिस्कशन करें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, इम्प्रूवमेंट्स, कुछ स्कॉलर्स हों, व्हाटसोएवर. I think it will be the best thing ever I have done even till my life, अगर ये चीज़ हो जाती है तो. So this is what it is, and yeah. सो उसमें जो स्पेसिफिकली कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लाइक हमें तज़किया नफ्स में जो हमें लिटरेचर रीड करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स की बुक्स से, कुरान और हदीस से, कि हम अपने आप को पीस, अपने आप को नेक, अपने आप को राइट पाथ में कैसे लेकर आए, ठीक है। वो सेल्फ हेल्प की बुक्स वो भी इसी तरह कुछ तस्वर दे रही हैं, अपने आप को अपने अपग्रेड कैसे करना है, अपने आप को बेटर कैसे करना है,
सो हम ही तो अल्टीमेट सोर्स है, तो वी आर इन द एज, लाइक अल्टीमेट सोर्स से पकड़ेंगे कि हाउ वी कैन बी ओवर बेस्ट ओवर सेल्फ, ठीक है, फ्रॉम दी एंड शैतान के हथकंडे और उसके बाद अपने नफ्स के हथकंडों से कैसे छुटकारा पाना है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन। आई एम आल्सो लर्निंग एवरीथिंग, जो भी दोनों सेक्टर्स में हो, एंड दिस डिफरेंट 2-3 अदर सेक्टर्स एज वेल, ठीक है। बट आई एम नॉट pursuing much of it, but ये जो है ना, ये it's important, so we will be inshallah discussing more of it inshallah. Thank you। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसको आई थिंक यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और जहाँ पॉसिबल हो सका, सो थैंक यू गाइस। आज मैं सिर्फ वन हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो इसको परस्यू किया जाए, बिकॉज कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को बहुत आगे लेके जा सकती है, अदरवाइज यू विल नॉट बी सक्सीडिंग एनी ऑफ द थिंग, ओके। कंसिस्टेंसी इज इट, सो कंसिस्टेंसी की दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह ताला से कि हमें कंसिस्टेंसी बना दें अपने अमल के अंदर, ताकि हम डिट्रैक्ट ना हो, ठीक हो गया। सो अल्लाह हाफिज़।